जैसे हमने पढ़ा वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स रहते हैं, तो ये स्मॉल एनिमल्स जो हम हमारे घर में देखते हैं, हमारे आजू बाजू देखते हैं, इन स्मॉल एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स. सो व्हाट आर इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स आर द स्मॉल एनिमल्स. These insects have 6 legs. जो एनिमल्स को 6 लेग रहते हैं, that animals are known as insects. Okay. The animals who have 6 legs, that animals are known as insects. अभी देखो ant, if you will see ant, if you will see grasshopper, अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा, ध्यान से ऑब्जर्व किया रहेगा एंट को, एंट के बॉडी को, ग्रासहॉपर के बॉडी को, बटरफ्लाई के बॉडी को, अगर आपने देखा कैटरपिलर, Yes. caterpillar, you have seen the caterpillar has so many legs, right? So the animals who have 6 legs, ants has 6 legs, caterpillar has 6 legs, mosquito has 6 legs. So these all animals are known as insects. Okay. Yes. Animals who have 6 legs, that animals are known as insects. So some insects can fly, some insects crawl. ठीक है, ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉल करते हैं, जिनके पास विंग्स नहीं रहता उड़ने के लिए? The insects who don't have wings, they crawl. So which are the insects which crawl? Ants and termites. Termites is also one of the insect. Yes. Okay. So termites, where you will find termites? Termites grow on the furnitures, on the woods. Wood रहता है ना, लकड़ी, उसके ऊपर वो termites grow होते हैं. अगर furniture is very old, furniture बहुत पुराना हो जाता है, तो उसमें क्या grow होना शुरू करते हैं? Termites grow होना शुरू करते हैं. See, carefully see the spelling of termites. T-R-M-I-T-E-S. ये spellings याद रखो, oral में पूछे जाएंगे, ठीक है? So which are the insects which can crawl, which don't have wings? They crawl with the help of their legs. Ants and termites are the insects which crawl. They crawl on the floor. They don't have wings to fly. Okay. Which are such insects? Ants and termites. एंड चीटियां. एंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चीटियां. एंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, राइट? रेड कलर एंड ब्लैक कलर. किसने किसने चीटियों की ये काटा है? किसने किसको किसको चीटियों ने काटा है? नव्या को काटा है, पार्थी, मौर्य, सबने चीटियों की सबको चीटियों ने काटा है. ओके, चिन्मय, Sanjita also. So everybody has taken the bite of ants, right? तो जब ये वो लाल चींटी जब काटती है कितना दुखता है? बहुत दुखता है ना? बहुत दुखता है. इधर पूरा लाल हो जाता है, right? The place where she bites, it becomes red in color. So ants don't fly, they crawl on the floor. Okay, they crawl on the floor. They don't have wings to fly. They crawl on the floor like this ant is moving. Okay, then termites. Termites, where you will find? You will find termites on furnitures. Okay, furnitures या कोई wood बहुत पुराना हो गया, furniture has become old, wood has become old, then on that furniture what grows? Termites grow. टर्माइट्स के भी देखो कितना बड़ा है टर्माइट, कितनी बड़ी मूंछ है उसको. उसको भी 6 लेग्स रहते हैं. Ants also have 6 legs. Termites also have 6 legs. Okay. So these are some insects which cannot fly, but they crawl. Remember the name of the insects who cannot fly, can crawl. They crawl on the floor. So which are the insects? Ants and termites are some insects which can crawl on the floor. Then which are the insects which can fly, which have wings? Mosquito, butterfly and honeybee.
हनी बी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, हनी बी भी एक इंसेक्ट है, butterfly and mosquito, these are the three insects which can fly, they have wings. कभी कभी कॉकरोच भी उड़ता है, राइट, उड़ता हुआ कॉकरोच देखा है, किसने किसने उड़ता हुआ कॉकरोच देखा है? अर्विता ने देखा है. So sometimes some cockroach also have wings, they also fly. Okay, डर लगता है ना कॉकरोच से, वो मुंह हिलाता है तो कितना डर लगता है, राइट? So insects which can fly, they are mosquito, butterfly and honeybee. These are the three insects which can fly. The insects which crawl on the floor are ants and termites. Remember this thing. I will ask you in oral which insects can crawl, which insects can fly. Okay. Chalo. Now, we saw insects. What are insects? Insects are the small animals that have 6 legs. जिनको 6 लेग रहता है, वो एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स. प्रकृति अनम्यूट करो. यस प्रकृति. Yes. What are insects, प्रकृति? What are insects? 6 eggs. 6 legs. The animals who have 6 legs, that animals are known as insects. More. Tell me the names of some insects. Ants. Ants. और कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? Ants. Honeybee. Honeybee. Housefly. Housefly. मक्खी, हम मक्खी जिसको बोलते हैं, that is also an insect. Okay, so these are some insects. प्रकृति थोड़ा ध्यान दो बेटा. Okay. Okay. So what are insects? The small animals are known as insects. The animals which have 6 legs, they are known as insects. Some insects can fly, some insects crawl. Okay. Now what we are going to study? We are going to study the life cycle of butterfly. देखो, हर एक लिविंग बीइंग का एक लाइफ साइकिल रहता है. लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं? फ्रॉम बर्थ टिल एडल्ट. बर्थ होने से एडल्ट बनने तक एक स्टेजेस रहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं लाइफ के, जिससे हम गो थ्रू करते हैं. ठीक है. when we are born, when human beings are born, they are small baby. ठीक है. हम जब भी born होते हैं, हम लोग एकदम small baby रहते हैं, छोटा बेबी रहते हैं. as time passes we start growing, right? After first we are baby, after that we become boy or girl. जैसे अभी आप हो, पहले आप बेबी थे, अभी बॉय और गर्ल हो गए. ठीक है. आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल ऑल ऑफ यू विल बी अ टीनेजर्स. आप सब क्या हो जाओगे? टीनेजर्स हो जाओगे. After few years, you will all will become an adult woman and adult man, right? तो ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं लाइफ के. ऐसे ही एनिमल्स के भी डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं लाइफ के. So what are the different stages of life of butterfly that we are going to study? Okay, understood everybody what is known as life cycle? Life cycle किसको बोलते हैं? The different stages of a
living being. Okay, life cycle is the different stages of a living being. एनिमल्स के भी लाइफ साइकिल होते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के भी लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, हम पहले बेबी रहते हैं, जस्ट बॉर्न बेबी रहते हैं. आफ्टर फ्यू इयर्स वी आर ग्रोन एज बॉय एंड गर्ल. जैसे आप सब अभी हो, सब लोग बॉय एंड गर्ल हो. आफ्टर फ्यू इयर्स यू ऑल विल बिकम अ टीनेजर. ठीक है, उसके बाद और थोड़े सालों के बाद आप सब लोग क्या हो जाओगे, एक एडल्ट मैन, एक एडल्ट वुमन में हो जाओगे. ठीक है, यू विल बिकम एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस, दीज आर द डिफरेंट लाइफ साइकिल ऑफ अ लिविंग बीइंग. नाउ व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई? That we are going to study. Now, life cycle of butterfly I will tell you with the help of a story. How many of you want to hear a story? किसको किसको स्टोरी सुनना है? सबको स्टोरी सुनना है, प्रकृति को नहीं सुनना है. स्टोरी सुनना है, स्टोरी सुनना है प्रकृति. Okay, so all of you want to hear a story. I will tell you the life cycle story of life cycle of butterfly. ठीक है, सब लोग को ध्यान से सुनना है. I'm going to ask questions regarding the life cycle of butterfly after that. Okay, so listen carefully the story. Once upon a time, what was it? It was a Sunday morning. Okay, कौन सा दिन था? संडे का था, फंडे का था. तो और क्या था? मॉर्निंग था. sun was shining very brightly in the sky. Sun was smiling and shining very brightly and giving us heat and light. Okay, so one day on the Sunday morning I went out for a walk. Where did Harsha teacher go? Harsha teacher went for a walk on Sunday morning. When I was walking on one of the tree, what I saw on one of the trees leaf, एक झाड़ के पत्तों में मैंने क्या देखा? सब लोग इधर देखो, मैंने क्या देखा? एक झाड़ के पत्ते में ये व्हाइट कलर का क्या है? On one of the trees of the leaf, some eggs were laying. मैंने कुछ एग्स देखे एक झाड़ के पत्ते में. I saw three eggs on a leaf. Okay, I thought ये किसके एग हो सकते हैं? कौन से एनिमल के एग हो सकते हैं? ये स्पैरो का एग होगा? नहीं. किसका एग है? I was wondering of which animals are these eggs. Then I waited for few minutes. मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई. I thought might the egg gets hatched. अगर कोई एक अंडा टूट गया तो मालूम पड़ेगा ना किसका है, कौन से एनिमल का है. So Harsha teacher waited for few minutes. Harsha teacher waited for few minutes. What happened after few minutes? One egg got hatched. One egg got hatched. अभी एक अंडा टूट गया. एक अंडा टूटने के बाद उसमें से क्या निकला? Which animal came out of that one egg? A caterpillar came out of that one egg. एक अंडा hatch हो गया. One egg got hatched. Out of that egg, what came? A caterpillar came out of that egg. See, caterpillar is so colorful, right? So small, so colorful. Caterpillar came out and he was searching for something. What he was searching for? I asked the caterpillar, hello caterpillar, welcome to the world. What are you searching for? Caterpillar told, I'm very hungry. I want food. I want food to eat. My stomach is crying. I want food. So caterpillar went to search for food. He went to trees, one to trees, he went to search the food.
what he saw on one tree, what was growing? Some nice sweet oranges were growing on one of the tree. So caterpillar told, this is looking very yummy. I should eat that. So he started eating some oranges. He ate one orange. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. एक ऑरेंज खा लिया उसने कैटरपिलर ने, तभी भी उसका पेट नहीं भरा. उसने बोला और एक ऑरेंज खाता हूं. He ate one more orange. Yum, 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 yum. Orange is very sweet. Yum, 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 yum. Yum, yum, yum. He was eating. He ate 2 oranges. Now, still his stomach was not full. अभी भी उसका पेट नहीं भरा, अभी भी उसको बहुत भूख लग रहा था. I am still very hungry. I want more food. What he thought? He thought I will eat third orange also. Okay, so he ate third orange also. Yum, 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 yum. खा रहा था. उसने 3 ऑरेंजेस खा लिए, तभी भी उसका पेट नहीं भरा. अभी still the caterpillar, the small caterpillar was searching for food. He went to other tree. When he was searching for food, he went to other tree. दूसरे ट्री में गया. दूसरे ट्री में उसने क्या देखा? स्ट्रॉबेरीज ग्रो हो रहे थे. वो कौन सा ट्री था? स्ट्रॉबेरी का ट्री था. तो वो स्ट्रॉबेरी खाने चला गया. I will eat now this strawberries also. He ate one strawberry. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. खा रहा था. एक स्ट्रॉबेरी खा लिया उसने कैटरपिलर ने, फिर भी उसका पेट नहीं भरा. देखो कितना खाया. 3 ऑरेंजेस खाए, एक स्ट्रॉबेरी खाया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा और उसको भूख लगा था. I'm still feeling hungry. I'm still feeling very hungry. What should I eat now? Then he started having other strawberries also. He ate 2 strawberries at a time. दोनों स्ट्रॉबेरी खा लिया एक टाइम में. अभी देखो कितना खाया उसने. उसने 3 ऑरेंजेस खाए, 2 स्ट्रॉबेरीज खाए, तभी भी इसका पेट नहीं भर रहा है. Still he is hungry. Caterpillar is crying, I want more food. I want more food. My stomach is not full. अब मैं क्या खाऊं? Then he went to other trees and he started eating leaves. उसे क्या खाना शुरू कर दिया? उसने पत्ते खाना शुरू कर दिए. पत्ते खाए, 3-4 पत्ते खाए, फिर भी पेट नहीं भर रहा है इसका. Still he is very hungry. I am very hungry. I ate so much, still my stomach is not full. Now what should I eat? Then he saw some plums growing on the tree. What he saw? He saw some plums growing on the tree. So he ate 2 plums. उसने 2 plums खा लिए, 3 oranges खाए, 2 strawberry खाए, 3 पत्ते खाए, 3 leaves he ate, 2 oranges he ate, 2 plums he ate. खाया यम 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 खाया जा रहा यम 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 खा लिया इसने. अभी थोड़ी देर के बाद he felt his stomach is full now. His stomach was started paining. उसका पेट दर्द करना शुरू कर दिया उसके पेट ने. His stomach got started paining. He is telling, now my stomach is paining very much. Now I should not eat that much. अभी मेरा पेट दुखने लगा है, अभी मैं क्या खाऊं? So he stopped eating. He thought his stomach is full. उसका पेट भर गया, वो मोटा हो गया. इतना सारा खाना खाया, 3 ऑरेंजेस खाए, 2 प्लम्स खाए, 2 स्ट्रॉबेरीज खाए, 4 लीव्स खाए, इतना सारा खाना खा लिया, उसका पेट भर गया. His stomach is now full. Now what he is seeing? Now what the small caterpillar is seeing? A small pupa is getting formed around his body. क्या फॉर्म हो रहा है उसके बॉडी के आजू बाजू? क्या फॉर्म हो रहा है? एक प्यूपा फॉर्म हो रहा है.
ठीक है. After eating so much, what he is seeing, a small pupa is getting formed around his body. वो खुश हो गया, कैटरपिलर खुश हो गया. Yes, around my body a pupa is getting formed. Now what I will be doing, अभी उसने इतना खाना खा लिया. He thought, now I will take some rest. हम कैसे दोपहर का खाना खाते हैं, फिर हम लोग को नींद आता है तो हम लोग सो जाते हैं, वैसे कैटरपिलर ने भी बहुत सारा खाना खा लिया था. उसका पेट भर गया और उसके बॉडी के अराउंड क्या फॉर्म होने लगा, प्यूपा फॉर्म होने लगा. प्यूपा फॉर्म होने लगा तो उसने सोचा अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ. वो प्यूपा के अंदर जाके सो गया. He slept for weeks and weeks. For few weeks he went inside that pupa and he slept for few weeks. After few weeks, what we are seeing, after few weeks, after sleeping for few weeks inside that pupa, what is coming out of that pupa? वो pupa के बाहर क्या आ रहा है, एक beautiful butterfly is coming out of that pupa. Okay, after the caterpillar slept inside that pupa for few weeks, after few weeks, from that pupa what is coming, a beautiful butterfly is coming. A beautiful butterfly came out of that pupa and he started flying. He was very happy seeing himself. See, my wings are so beautiful, so colorful. Now I become an adult butterfly. अभी मैं बड़ा butterfly बन गया हूँ. अभी मैं उड़ूंगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके उड़ूंगा. Okay, so this was the story of a beautiful butterfly. All of you understood? सबको समझा? Yes, I am Leon. So should I